This is our third lecture, and this content is actually covered and saved from MIT, Harvard, and Portland State University. Okay, so you can also find the same slides at MIT open source as well. So today we will talk about. So now we have already learned about what is transportation planning, what is transportation management, what is transportation system engineering, what are the networks, and so on. We also covered of a different modes of transportation in terms of cost, in terms of a distance, in terms of a long haul distance, etc. So today we reach at a level from where our real learning is about to start. So transportation system engineering concepts are actually reviving and leading with the time, and it's leading towards the innovation at the functional design as well as at the physical and as well as at the organizational level. So each set of coordinated, internally consistent action is referred to a kind of a vision where we actually want to be. Okay. In transportation engineering or transportation system engineering, when we call only transportation engineering, that means that we are referring towards something very specifically. But when we talk about transportation system engineering, it actually gains much attention when we talk about it, how we can shape the cities, the countries, and also we can enable the international connectivity. So whenever we talk about systems, transportation system, we are trying to understand the logic that how we can enable economic activities, how we can promote community interaction, and how we can enhance the quality of life. Okay, so it is also very much essential for the sustainable development and as we already discussed in the very first lecture, to fulfill the 7 basic purpose of the transportation to provide safe, accessibility, secure mobility options within the country, within the region. Okay. The next slide is very much important. So here we are trying to understand that what are the contemporary issues which are already exist within transportation. Okay, so I will briefly explain one by one and you can write it down your own notes or something. Okay. So the first topic is about mobility. Okay. So now the question is why mobility is considered as a contemporary or the major issue, because we try to facilitate the user, the traveler, to move from origin A to destination B. But issues in terms of it didn't come in the form of an issue, but there are certain parameters, such as, for example, you would like to, as a transportation developer, you want to build specific route, but without knowing parameters such as, is there any land availability? What will be effect of that specific route on the global climate change? How much population will actually disperse? How much you are going to increase the urban sprawl? And how much security and reliability of the people may disturb? So mobility doesn't mean that it's an issue, but it's a very broader terminology. Could you explain mobility? The mobility is basically a freely movement, or like to move freely or to be easily moved. Okay, so this is very simple and very basic definition. So we can also define mobility as that it is a potential of the people, yeah, or for a movement from one place to another while using any of the 5 or 6 basic transportation modes. Okay. The second important parameter is about energy. So mobility only possible if we have the sources of energy.
So what are the sources of energy? There are different, such as coal, such as from the fuel, from the solar, from the wind, etc. But overall, we call them as a energy. So energy is the quantity or the parameter or the indicator which refers to the that how much energy is consumed by all components which are used in transportation sector. Okay, so the production, operation, and decommissioning of each and every type of a vehicle modes will be within the transportation infrastructure, either for example road or railway or ports and harbor, link with airfields, link with the boats, shipping, etc. Okay, so energy is actually the level through which we would like to understand the contribution to the sector, that how much total or final consumption, which is measure of all energy that are consuming. Okay. The third contemporary or major issue is about global climate change, or we can call it environmental issue as well. Okay. So how how the transportation is related or contributing to the global climate change? Of course, if there is a mobility, there will be energy. If there is an energy use either from any source, so there is a chances of contributing to the overall global climate change, or there will be environmental factors. So global climate change, when we talk about global climate change, or we are referring basically towards emission, which come from the combustion of different fuels, either from the in the derived fuels, or through, for example, air, or from the coal, etc. Okay. So transportation also lead like issues toward noise pollution, which also affect the ecosystem. So it means that only one direction leads us in like many direction. So the one is use of energy. So under that specific umbrella, we have the global climate change. But when we talk about a very broad terminology of a global climate change, we means that we are referring it toward noise pollution, water pollution, and also you should consider the effect of the ecosystem or the disturbance of the ecosystem as well. So means direct or indirect interaction or effect. The next part is about urban. When we talk about the urban world, urban means we are trying to see the world at a very bigger picture from the very top view. Okay, so we can see from the top that there are two type of a world. Okay, one is already developed world, another is underdeveloping, while the third one is the fast growing developed. So these are the three different world. But when we talk about urban, urban is basically a form which is describe this physical characteristic of a city. Okay, so it could be referred toward its size, its shape, its configuration, to understand what are the basic element within that city, within that country, within that specific region. Okay. So to understand the structure and how it could be analyzed at different scale, this is urban form. So now we are talking about developed and underdeveloping countries. Okay, so these are the different terminology which we try to derive them from the economic condition of the country, that how much per capita income is increase or decrease, or how much is the income of a single person, and support a high standard of living. Okay, so there are two parameters which we should consider. If we have a higher per capita income, the living condition will be improved. But if we have the low per capita income, the living condition, I wouldn't call it compromised, but I would say it wouldn't be at a level such as in Switzerland and Finland and Japan. So in like those countries which
which are considered is a developed state. So you cannot expect the same living standard, for example, in like Nepal, in like Pakistan, in like somewhere in Africa. So you cannot expect the same level, the same living standard, what is already in the developed countries. So developed and underdeveloping, those both terminologies are basically derived from the per capita income and the living standard, okay, which basically contribute to the economy. So the next level is developing, or we can call that the fast developing. So the country or the state or the region which have lesser developed industrial base and a bit lower human development index related to other countries. So when we talk about developed is quite clear, which is already have a very huge per capita income and the living standard is high. So through that per capita income, they are contributing to the country economy. Underdeveloping, which is basically below that specific range. But when we talk about the fast growing development, the fast growing developing, so the fast growing means China, the fast growing means India. So those countries who have a bit lesser stake from the developed countries, but a bit higher level of the per capita income along with the living standard of the less developed countries. I hope it's quite clear, madam. Any issue so far? No, sir. No, sir. Yeah, thank you. Because those terminologies are very much important to understand. Okay, so if you do not understand those concepts, so I would like to bring you to that bigger picture of the introduction system engineering at the end of your degree. I'm afraid if you did not understand those basic essential elements to consider before to draw any picture or any network or design anything, we will not get there. Okay, so it's very much important. Of course, the developing country have also growing economies. Their consumption is actually based on, of course, population as well. Okay, I will tell you a very short story of a one Chinese professor. So once I asked him that how long will it take China to become a superpower, like the growing power of the world. So could you imagine his response? He told me, "No, we are still far away from the developing stage, from the development. Still, we are trying to feed our people." So this was his level. So like we think that they are already developed, but in his mind, he told me that they are actually now doing their basic root treatment. So how they can feed and how they can provide food and shelter to all the people. So this is basically mindset of the people. So you need to understand those parameters in a very broader context. Okay, so urban form is done. So the next part is about that what is population. When we talk about population, so what is the role of population? Okay, so you need to understand that if you did not consider the population at a level where or which it needs to be calculated, then we might face issues in the future. For example, for the time being, if you did not consider, if you would like to build a network and you did not consider the people future, the demand in the future, demand in the coming 10 years, in 50 years, or in 40 years, or you create a infrastructure which is completely for a very upper class. Okay, so you need to understand that there are three categorically differentiation of a people living in the society, in the community. One are the people who are basically
They have a very high standard, while the next one they have a bit low, while the last one they have the very lowest category, which we call them like very beginner people or like basic people. So if you plan for the people who are in the upper class, who comes in the 1% or in the 1%, so your system will fail because that specific class that will never uh, uh, do their network, their commuting in that public transportation. So you need to always look for a class like middle class, which could also contribute to the lower class as well as the upper class could also be commuted. The next part is about the equity or like uh, physical equity. Equity is a very simple terminology when we want to bring the fairness, when we want to bring the equality. Okay, so this is basically the pro-social equity, which basically means that how much we want to seek the fairness in mobility as well as in the accessibility to meet the needs of all community members. Okay, so the next part is about productivity. The productivity is basically the balance in the need and manufacturing of the transportation fleet or the transportation vehicles. For example, if we need five vehicles to, and those five vehicles could provide all the services required within the city, and the system or the city administration, they ordered a buses of for about like 100 buses. So I'm afraid that they might end in a very serious issue. So you need to understand that how much you basically need to plan for according to the demand. If you did not plan according to the demand, then there will be issue, there will be problem. Okay. Next part is about security and reliability. I will tell you a story, so you can also read again the BRT article which I already wrote 2 years before. So this was, the title is about BRT, a project of a day or more. So the purpose behind it, that specific writing was, apart from the engineering aspects, if I would like to allow my wife, my children, my mother, my sister, my family members to travel in that public transportation, the first thing I would like to analyze, is it able to provide my family a safe and reliable service? If it's so, then of course I will send them. But if did not allow them, then I'm afraid that there might be problem. Okay. So when we talk about the security, so the security is a very broader term where we want to see how much safety is already provided, or or what are the things from which could cause or likely harm the people, the traveler within that specific facility, within that specific mode. So security means that how we can protect different people, different traveler from different type of threats, danger, etc. So for like that purpose, we always need uh, different monitoring surveillance system, uh, cams and cameras and so on. Okay. I will tell you a story. What happened with me in 2010 in at the Munich station in Germany. A friend of mine, he was actually visiting from another city of Germany. So when he just when I received him, so there were two security personnel. They stopped us and directly they told me, Mr. Farooq, you can go. But they were asking from my friend that. Can we see your, in German they call Afushintal, like the paper document. They call paper papier. So the paper document. So after communicating with them, he have already passport in each and everything, but
Then I asked from a friend of mine, he was a German, and I told him, ask him that how did they know that this face was did not register in that specific city. He said that they have a system which is called the face surveillance system. So if you enter in a big shopping mall, in a station, in a major hub district area, they directly know that you are kind of an unknown person in that specific city. Plus, they have also registration system within KVR, within their registration system. So if you intends to stay in any city for more than 1 month, so you should register yourself in that specific city because you might face kind of issues. Okay, so this is all about security. Okay, so this is security from outside. Again, security inside is, so like there should be proper spacing. So there should be the different section which could facilitate elder people, women's, children, young boys, and there should be proper separator, or like at least a security person who can see, or like through modern cams, that each and everything is going is per the planning or the planned activity. The last part is about reliability. Madam, would you like to explain reliability? सर रिलायबिलिटी इन द सेंस कि आप एक स्पेसिफिक मोड पे कितना रिलायबल कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, कितना रिलायबल Very good. है. Very good, very good. So when we talk about travel time reliability, that basically reflects to the quality and variability of the travel time. मैडम, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था ना, you guys need to understand the words, okay, जो जिनके जरिए आप उनको explain. Number one क्या है? Reflects the quality of what? Quality of time and variability, कि कितना उसकी जो वेरी कर रहा है, how much you can basically rely on that. Reliability in transportation system is completely dependent on the provider, or like the which provide to the user with a consistent range of a how you can call it, the predictable travel times. Okay, जिसके जरिए वो predict करके if that specific person can exactly reach to A to B in that specific time, and he is quite sure, damn sure about the system reliability. So of course that specific Mr. X will use your system. So transportation system reliability is also a very important core performance outcome of many management and operation strategies as well. Maybe you heard or maybe read the article in Japan. Uh, Once a train was late for about 15 to 20 seconds, so the Minister of Transportation in Japan, he actually resigned because he said that because of my less performance, or like less efficiency, the train was delayed for about 15 to 20 seconds. So that means reliability. That doesn't mean reliability जो हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है कि आज का हम प्लानिंग करते हैं और 2 दिन के बाद हमें चीज मिल जाती है. ठीक है. If you have any question in the critical contemporary issues, क्योंकि अभी हम लोग चीज़ों के अंदर जा रहे हैं, और आप लोग खुदारा इन लेक्चर्स को एक दफ़ा फिर से भी देखने की आप लोग टाइम निकालें, बिकॉज ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज़ वेरी मच डीप. आप लोग यकीन जानिए, मुझे तैयारी के लिए हर एक लेक्चर के लिए 1 से 2 घंटे लगते हैं to revise each and everything, to prepare each and everything. Okay, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको देख लें. Okay, if there is no question, we will jump to the next slide. Next slide is that what are the phases of transportation system. Okay, so like हम लोग we start from the conceptualization, from the planning, from the construction, from the operation and maintenance. So अब conceptualization क्या है?
The act or process of forming any idea or principle in your mind, और कोई भी प्रोसेस जिसके जरिए रिसर्चर आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट यूज इन रिसर्च और उसकी फिर इस तरह की एक एक्सप्लेनेशन दे सके जिसके जरिए उसी कंसेप्ट का, फॉर एग्जांपल जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो जब किसी चीज की विजुअलाइजेशन या कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं तो एक तस्वीर बना देते हैं और फिर उसी तस्वीर में पूरी की पूरी कहानी होती है। तो सिमिलरली जितने माइंड होते हैं, स्मार्ट ब्रेन होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, तो वो उनकी जो एक्शन या प्रोसेस या जिसके ज़रिए वो अपना प्रिंसिपल या उनके जहन में जो आइडिया चल रहा है उसको इस तरह के फॉर्म में ले आए ताकि लोगों को दिखाई दे। कंसेप्चुअलाइजेशन से मुराद क्या है कि हम एक टारगेट बना देते हैं, उसके नीचे एक विजन बना देते हैं, उसके नीचे मिशन होता है, फिर उसी विजन और मिशन को फिर हम सब इंडिकेटर्स के अंदर तकसीम कर देते हैं कि दोज आर द पैरामीटर्स और द एलिमेंट्स थ्रू विच वी कैन अचीव द सेड विजन एंड मिशन। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का। ये हम लोगों ने बड़े we actually explain that specific terminology again and again, लेकिन again आप लोग की just understanding के लिए कि प्लानिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की करंट स्टेट क्या है और उसकी डिजाइनिंग फ्यूचर के लिहाज से क्या आप वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंडिकेटर्स उन सबको कंबाइन कर रहे हो जो कि आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट एक्स में डाल के आपके जो गोल्स है या आपके जो कंट्री वाइड पॉलिसीज है तो उसके अंदर क्या आप उन सबको फुलफिल या कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। इसका सिंपल मकसद ये है प्लानिंग का कि जो हम प्लान कर रहे हो तो वो इस तरह की प्लानिंग हो, नॉट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन ओनली but also not to compromise on the resources of the future as well as to predict the future challenges as well. Okay? नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जब हम एक कंसेप्ट आ जाता है एज ए इंजीनियर आप लोगों को आइडिया होगा कि जब हम एक प्लान होती है उसकी फिर PC1 बन जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है, उसके बाद फिर हम लोग प्राइम अवेरा के स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेजेस की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जब हो जाती है उसके बाद अब कंसेप्चुअलाइजेशन प्लानिंग, ये आपके दोनों वो स्टेजेस है जब आपका प्रोजेक्ट आपके कागज पे रहता है, लेकिन जब वही कागज जो होता है वो कन्वर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ ए रियल एंड टेंजेबल कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी स्टेशन, कोई भी रोड, कोई भी एयरपोर्ट, that part is referred towards the construction. इसके बाद फिर हमारे साथ लास्ट पार्ट आ जाता है विच वी कॉल ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन जो सर है ये कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क होगा? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे साथ बेसिकली फैक्ट्री लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली रेफरिंग्स टू दी हाउ वी कैन engaged in the building and rebuilding of the facilities for rail, motor vehicle, water, air, pipeline, etc. और इसी के अंदर हम लोग जब बात करेंगे उन इक्विपमेंट की जो फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन के लिए या रिमोट कंट्रोल के लिए चाहिए होंगे, तो ये वो पार्ट है जो हम कंस्ट्रक्शन, या टाइटल देख ले, इसका टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फेजेस। तो ये फेजेस के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन का एलिमेंट आता है और जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट बेसिकली रेफर्स टूवर्ड अगर आपने रेल की पटड़ी बेचानी है तो उसकी प्रोडक्शन जो होगी वो पटड़ी की गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन की फैक्ट्री के अंदर होगी। तो वो फैक्ट्री के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होके आपके कंस्ट्रक्शन का हिस्सा जब बन जाए तो दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट। और जो आपकी प्रोडक्शन या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो आपकी एक क्योंकि आप बेसिकली एक
एक एम्बैगमेंट, एक लेवल आपके साथ है, आप उसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल लेकर आ रहे हो। तो जो इस तरह की मटेरियल जो आपके साइट में कंस्ट्रक्ट नहीं होते विद इन एक स्पेसिफिक फैसिलिटी में, या एक जिसको आप कह दो कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो उनकी वहाँ पे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। और फील्ड में जब वो आपके मोड का हिस्सा बनेगा, उसके ऊपर आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले वो जो उसका फाइनल वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑपरेशन का या फिर मैनेजमेंट का। तो द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन इज कंसिस्ट और काइंड ऑफ comprised of all types of modes। अच्छा, अब ये आप लोग एक चीज समझ ले कि जब भी हम ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी एक मोड की हम लोग बात नहीं कर रहे। इसमें हर एक चीज आ जाती है। हर एक चीज का मतलब व्हीकल मेंटेनेंस भी आ जाती है, फ्यूल की कॉस्टिंग भी आ जाती है, रूटिंग भी आ जाती है, मैपिंग भी आ जाती है, कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी वेयर हाउस भी आ जाती है, आपकी ट्रैकिंग भी आ जाती है, आपकी कार्गो हैंडलिंग भी आ जाती है, आपका कन्वेयर बेल्ट भी आ जाता है। और इसके साथ साथ आपकी इवन काउंटिंग और मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विद इन एक मोड के अंदर, या फिर आपके इंटीग्रेटेड मोड के अंदर जब होते हैं, तो इन सब को मिला के फिर हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन अगर हम ऑपरेशन की बात कर ले, तो एक दफा फिर से आप लोग समझ ले कि कंसेप्ट में हम एक आइडिया देख लेते हैं, उसी आइडिया को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ए डिफरेंट डिसीजन मेकर या फिर स्टेक होल्डर या फिर जो हमारे एक्सपर्ट, सेम एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ उसी आइडिया को इन्हांस करके एक फाइनल कंसेप्चुअल मॉडल बना देते हैं विद विजन, विद मिशन। उसके बाद फिर इसकी प्लानिंग आ जाती है, फिजिबिलिटी स्टेजेस जिसको हम लोग फिजिबिलिटी स्टेज 1 कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग PC1 कहते हैं। इसमें से किसी भी कंसेप्ट की, आइडियाज की रियल टाइम ड्राइंग्स, मैप्स वगैरह वगैरह बन जाती है, जहाँ पे हम लोग आजकल उसको मॉडर्न वे में देख रहे होते हैं, प्राइम अवेरा के साथ या डिफरेंट टूल्स के साथ। ठीक है, कि मतलब हम अगर किसी भी प्रोग्रेस की, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी प्लान की ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जब आपका कंसेप्ट जो होता है और जो आपने प्लान कर दिया है, उसी को अब हम एक टेंजेबल प्रोडक्ट में, एक दिखाई देने वाले इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आ रहे हैं, सच एज फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, यार्ड, कार्गो, पोर्ट के लिए कोई पार्किंग, एयरपोर्ट में हैंगर्स, एप्रॉन्स, मोटरवे, हाईवेज, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, सेपरेशन, मीडियम वगैरह वगैरह। तो ये हमारे वो कंस्ट्रक्शन के वो एलिमेंट आ गए जो हमें टेंजिबल वेज में दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 स्टेज यहाँ तक हो गए हैं। लास्ट स्टेज है कि जब हम उसी चीज को रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, कि जो हमने विजन देखा था, जो कंसेप्ट हमने बनाया था इन टर्म्स ऑफ विजन एंड मिशन, तो अब हम किस तरह थ्रू ऑपरेशन और मेंटेनेंस उसी को अब हम देख रहे हैं। अब आप लोग देख लें, अगर मेट्रम में एक सवाल आ जाए कि कंसेप्चुअलाइजेशन का और ऑपरेशन मेंटेनेंस का आपस में क्या रिलेशन है, और हम इन दोनों की इफेक्टिविटी किस तरह मालूम करते हैं, तो आई एम श्योर दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इंशाल्लाह 25 नंबर का अगर एग्जाम है तो उसमें से 10 से लेकर 15 कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, इसमें से मतलब इसी तरह के या इसी नेचर के क्वेश्चन। मतलब ये आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फेजेस, वो मुझे पता है कि आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल
प्लानिंग का पार्ट हम हटा दें तो इज इट पॉसिबल टू रीच टू दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एट दी इफेक्टिव लेवल? तो वो फिर आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे जवाब दे सकते हो। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बड़े बड़े पेजेस मेरे लिए लिखो, 2 से 3 लाइनें विल बी मोर देन एनफ। सो इसमें से आप लोग की रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप लोग आगे पढ़ लोगे कि हाउ टू बी मोर इफेक्टिव या हाउ टू ब्रिंग द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन योर राइटिंग, इन योर स्पीकिंग, इन योर लिसनिंग, इन अगेन इन योर राइट। जब आप कोई भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो, मतलब कंक्लूसिव वे ऑफ राइटिंग। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी का कोई सवाल, कोई इशू? नो सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम का। यहाँ पर आप लोग देख ले कि स्लाइड के टॉप में लिखा है कि इट इज द इंटरफेस ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मैनेजमेंट, सोशल और साइंस। अब आप देख ले कि जो वेन डायग्राम आप लोगों को गिवन है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी वेन डायग्राम के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं या क्या लेकर आना चाहते हैं, इसका मकसद ही बेसिकली यही है कि ये वो पोर्शन है वेन डायग्राम का जो इस्टेब्लिश हुआ था एमआईटी में 1998 में। और इस इंजीनियरिंग सिस्टम के डिवीजन के मुताबिक हम किस तरह डिफरेंट वेज ऑफ द सिस्टम को लेकर आके एक प्रोग्रेसिव सिस्टम की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो ये इस पूरे चार्ट का मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है ये बेसिकली बेस कर रहा है ऑन द इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग ऑफ व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट द सिस्टम अप्रोच, या किस तरह एक सिस्टम जो है वो इस तरह के अंडरपिनिंग इंटेलेक्चुअल बॉडीज को लेके चले, ताकि वो हमारे पास एक एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिस्टम हो जिसमें हम मैनेजमेंट को, सोशल इश्यूज को और इंजीनियरिंग को एक साथ ले आए। ठीक है, आप लोग जल्दी मत करें। इसी पे, मैनेजमेंट पे, सोशल इश्यूज पे और इंजीनियरिंग पे ये पूरा का पूरा लेक्चर बेसिकली बेस है कि मैनेजमेंट के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज के अंदर कौन से आते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं। आप लोग अगर ये वेन डायग्राम के बीच में आप लोग देख लो, जहाँ पे मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज और इंजीनियरिंग आपका मीट कर रहा है, दैट इज बेसिकली कंसिस्ट या कंपोज्ड ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, अगर इसको मैं आसान से अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी वो चीज़ें होंगी जिनको हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पिक्चर जो है ये उसी वेन डायग्राम के अंदर मैंने इंसर्ट की है कि जहाँ पे ये तीनों सोशल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग आपस में हिट हो रहे थे। तो ये अब यहाँ पे हम लेकर आना चाहते हैं 5 से 6 जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग मोड्स है। अब इसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं, नंबर 1 टॉप से आप लोग देख ले, सॉरी टॉप बॉटम से, कि नंबर फर्स्ट हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या सिस्टम इकोनॉमिकल है कि नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्या सिस्टम कन्वीनियंट है कि नहीं, मौजू है कि नहीं, उसका, उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसी है, फंक्शन वो किस तरह कर रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का वहां पे क्या क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मैं सिस्टम पे रिलाई कर सकता हूँ। फिर इन सब को मिला के हम लोग मिला देते हैं सिस्टम प्लानिंग के अंदर, सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर और सिस्टम डिजाइन के अंदर। When we would like to integrate multimodal and apply all those parameters for the purpose to create a portion or a system or interface
which consist of all those three important elements such as management, social issues in engineering, that portion we call transportation system engineering. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब ये वो सारी चीजें थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए थे, तो आप लोगों को मैंने एक हल्के से हाईलाइटेड इश्यूज में एक दफ़ा फिर से भी बता दिए कि करेक्टरिस्टिक क्या थे, कंटेम्प्ररी इश्यूज क्या थे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है। तो इसके बाद अगर आप लोगों से कोई भी पूछे, आई होप कि नाउ यू पीपल विल एक्सप्लेन विद द वेन डायग्राम कि इसमें से हमारे साथ ये सारी चीजें हैं और इसमें से हम मल्टी मोडल इंटीग्रेशन बेसिकली करना चाहते हैं, जिसमें से हमारे जितनी भी एग्जिस्टिंग मोड्स है उन सबको मिला के हम ये 7 से 8 पैरामीटर्स अप्लाई करके वी वुड लाइक टू सी इट्स इफेक्टिविटी। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं क्लियूस सिस्टम। क्लियोस, C refers toward complex, L refer toward large scale, I refer toward interacted, O refer towards open, S is connected or related to socio-technical. I can assure कि अगर आप लोगों ने अपनी अपनी डिग्री में इन 5 अल्फाज की इम्पोर्टेंस सीख ली, तो आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी अ परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियर। आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू गाइस विल कंट्रीब्यूट इन अ वेरी ट्रेमेंडस। अभी हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े अल्फाज है, देख लीजिए। इन अल्फाज को समझे बगैर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास वो मैकेनिज्म है जो हम लोग बनाना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो हो वो कम्प्लेक्सिटी और इसके साथ साथ एक बड़े लेवल पे किस तरह खुला रख के हम सारी की सारी जो सोशल और टेक्निकल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक जगह पे लेकर आ सके। उर्दू में मेरे ख्याल में इससे फिर आसान अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ जब भी हम कोई किसी रीजनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, जिसमें से हमारा इवन ITS भी आ जाता है, आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट भी आ जाती है, आपकी ऑपरेशंस भी आ जाती है, तो ये इन सबको जब हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारा एक क्लियूज सिस्टम बन जाता है। क्लियर हो क्या यहाँ तक? अभी एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बता दीजिए इफ यू थिंक दैट दिस इज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि कम्प्लेक्स पे हमारे साथ आप लोग देख लीजिए, कम्प्लेक्स पे हमारी अलग टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ कम्प्लेक्स की है। इसके बाद फिर कम्प्लेक्स के अंदर हमारी नेस्टेड आ जाती है, इसके बाद फिर लार्ज स्केल आ जाता है, इसके बाद फिर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट आ जाता है, उसके बाद फिर ओपन आता है, उसके बाद फिर सोशो टेक्निकल आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको हम स्विच